Hello Scorpios, welcome to the Secret Craft by Siddhali, where I empower souls one card at a time. If you are new to my channel, please subscribe to it, and if you like my videos, please like and share as well. And if you want to give any suggestions to me, or if you want a better understanding of certain things, you can put that down in the comment section and I'll definitely give you a reply to it. Or if you give me any suggestions, I'll definitely try to incorporate it into my readings. Okay, so what we are gonna do today is a love reading, but it's not a very simple reading. It goes one layer deeper inside to understand the situation better. For this I have pulled out 3 cards. तो एक कार्ड है आपका करंट सिचुएशन, द सेकेंड कार्ड इज द challenges that you are facing in your relationship or in your love life, and the third card is for your advice. And I have pulled out one oracle card which will give you overall gist of the reading or give you a deeper insight into your relationship or your love life, or it is a message from your divine. Okay, let's get started. So for your current situation, it's 9 of Pentacles. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, it's a wonderful card. ये कार्ड बताता है that you have a very stable relationship, or your love life is very stable, very peaceful, and आपने जो अपने लिए सोचा था, आप जिस लेवल पे, जिस जगह पे आप खुद के रिलेशनशिप को देखते थे, या जो एक बॉन्डिंग आप चाहते थे आपके रिलेशनशिप में से, वो आपके पास अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में है. आप खुद को काफ़ी लकी समझ रहे हो, काफ़ी पीसफुल समझ रहे हो. यू फील दैट फाइनली थिंग्स आर हैपनिंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स, एंड योर रिलेशनशिप इज़ वेरी फुलफिलिंग. It is giving you immense happiness, and there's no lies, there's no deceit, and it's just pure love. Okay, that's what I'm getting from your situation. And मैं और एक चीज़ ये आपको बताना चाहूँगी कि ये जो आपका करंट सिचुएशन है, जो दिखा रहा है कि इतना फुलफिलमेंट भरा हुआ है, इतना हार्मनी है, हैप्पीनेस है आपके लाइफ में, बट स्टिल आप थोड़े से आई विल से कंफ्यूजन में हो. एज इन कंफ्यूजन आई वुड से कि आप ये फील कर रहे हो दैट इट्स लाइक too good to be true. Is it true? Is this really happening to me? Is this relationship really so fruitful for me? Like, how is it giving me so much happiness? क्योंकि आपके जो पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं या पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो थोड़े ट्रॉमेटिक रहे, जिसके वजह से आपको वो उतनी श्योरिटी नहीं मिल पा रही है, जिसके वजह से आप थोड़े से डरे हुए हो. Okay, now in your challenging situation, it's 3 of Cups. अब 3 of Cups क्या बताता है कि जैसे मैंने कहा कि आपके लाइफ में आप थोड़े से इनसिक्योर भी फील कर रहे हो कि जो भी मेरी लाइफ में इतने हार्मोनियस, इतने हैप्पीनेस मोमेंट्स आ रहे हैं, या फिर मैं फाइनली इतना पीसफुल फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये चले तो नहीं जाएंगे. आई होप दिस डजंट वैनिश अवे. एंड उसके वजह से ना, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ फुल्ली. आप ना इस इंसान के साथ कुछ सेलिब्रेट कर पाते हो वेरी ईजीली, बिकॉज यू आर इन दैट कॉन्स्टेंट फियर दैट व्हाट इफ आई लूज ऑल दिस. तो आपका ये चैलेंज है, यू हैव टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ वॉट यू डिजर्व्ड, एंड दैट इज़ वाई ऑल सच गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ. डोंट डाउट इट. ये मत समझिए कि यार ये मैं डिज़र्व कर रहा हूँ क्या, या कर रही हूँ क्या, ये इतना अच्छा मेरे साथ हो रहा है, इतना अच्छा रिलेशनशिप मेरे पास है, इतना अच्छा पर्सन हु हैज़ अनदर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर मी, ये पॉसिबल है क्या. डोंट स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस.
ये आपके लाइफ में हो रहा है बिकॉज यू डिज़र्व इट, यू डिज़र्व सच काइंड ऑफ अ पर्सन, यू डिज़र्व सच काइंड ऑफ हैप्पी मोमेंट्स. प्लीज़ सेलिब्रेट इट. खुद को रोकिए मत, खुद को उस कॉन्स्टेंट फियर से हटाइए, बिकॉज दैट इज़ नॉट हेल्पिंग यू. आफ्टर अ पॉइंट आपके जो पार्टनर है वो भी ये सोचेंगे कि वॉट इज़ हैपनिंग, एम आई नॉट कीपिंग दिस पर्सन हैप्पी, वाई आर दिस सो मच fearful. एंड क्या होगा ना, आफ्टर अ पॉइंट ये जो आपके छोटे छोटे फियर्स है ना, दैट कैन टर्न इन टू अ वेरी बिग इशू फॉर यू. Like future में it can become so big that you can start questioning everything your partner does for you. So don't let that happen, okay? Let it loose. शांत रहिए, be calm, get with your partner and celebrate things and be happy and have some fun, and that will make your relationship very strong. Advice is नाइट ऑफ कप्स. एडवाइस ये है कि सबसे पहले अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन इज़ अ जेन्यून पर्सन, दिस पर्सन इज़ रियली रियली वेरी लॉयल टू यू, and this person has true feelings for you. Okay, so your advice is that trust what is happening in your life, trust the universe, trust the divine. ओके, प्लीज़ खुद को रोकिए मत. अगर आपको इवन इफ यू फील दैट दिस पर्सन इज राइट फॉर मी, जस्ट गो एंड एक्सप्रेस इट टू दैट पर्सन. डोंट वेट फॉर हिम और हर टू कम टू यू एंड देन एक्सप्रेस. आपको फील हो रहा है ना, आप एक्सप्रेस करिए, आप उनको बताइए कि आपको कैसा फील होता है उनके लिए. ओके, just don't waste your time into overthinking and doubting yourself and the person and the feelings and the situations. It's of no use at all. Please understand that. Your oracle message is success. This relationship is bringing success to you. It's a happy relationship. This person is very genuine, and this person wants to grow with you and wants to bring that abundance into each other's life. Okay, so please stop doubting. I hope you like my video, and if you do, please सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए. इनफैक्ट मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, उस पर मैं डेली गाइडेंस देती हूँ. यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो. एंड इफ़ यू वांट पर्सनल कंसल्टेशंस, ऑल द डिटेल्स आर गिवन ऑन माई डिस्क्रिप्शन. ओके, टिल देन, बाय बाय.